So we have completed nuclear physics. I think we have to start with plasma. If I am not wrong, या plasma भी हो गया है, न्यूक्लियर भी बाकी है. वो 3-4 क्लासेस में क्या याद नहीं रहता. मैम लास्ट टाइम प्लाज्मा आपने करवाया था. सॉरी, क्या लिया था? ओहो, मतलब हो गया है प्लाज्मा भी. वाओ. सो आज तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो आई हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नाउ. अकॉस्टिक्स तक के जो भी न्यूमेरिकल्स हमने किए, ओनली न्यूमेरिकल्स. ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल्स, नथिंग एल्स. फाइन. मैम न्यूमेरिकल्स के साथ ऑप्शन होगी? मल्टीपल चॉइस होगा ना, एलएमएस पे है. सो इट विल बी मल्टीपल चॉइस. वन आवर. क्या? न्यूमेरिकल्स. अच्छा, इसमें भी पीपीटी मैम. यहां तक, यहां तक. ओके. ओ तो अभी पंप ही बाकी रहे, पंप और गेज. गुड. चलो स्टार्ट कर देते हैं तो. From current slide. So as we know, as you have seen that these are the various pumps. We are going to study the rotary pump, diffusion pump, and ion pump. Cryo pump we will not see, and two gauges we will be seeing, the ion gauge and the Pirani gauge, right? So these are the various classification, different types of vacuum pumps. The gas transfer vacuum pump, sorry, and the entrapment vacuum pump. This we have given just for your information. कितने type के pumps are possible, right? Now let us start with the first type of pump, that is a rotary pump. Rotary pump is also known as a rotary vane pump. Yeah, it is also known as a roughing pump, right? A rotary pump is also known as a rotary vane pump या roughing pump. ओके, रफ वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ये यूज होता है. जस्ट लाइक द फर्स्ट गियर ऑफ ए व्हीकल. व्हीकल की जो फर्स्ट गियर होती है ना, वैसे ही वैक्यूम में दिस इज द फर्स्ट गियर. ओके, टू स्टार्ट विद द रोटरी पंप. So it has a capacity of 762 to 10 to the power minus 4 torr, right? And it is known as I told you, it is also known as a roughing pump. Yeah, rough vacuum create करने के लिए we are using it. What is the principle? Gas transfer by rotor from inlet to outlet. There is a transfer of gas from high pressure to the low pressure with the help of the vanes. Vanes, I'll show you what is this vane. So these are the vanes. Yeah. Okay. I think let me show you the video first, and then we will go for the. See, this is a vein. Okay, ये आपका इनलेट है. सपोज कोई असेंबली है, कोई स्पेस है, चेम्बर है, जहां पे मुझे रफिंग करना है, राइट? सो दैट विल बी कनेक्टेड ओवर हियर. यहाँ पे जो एरो दिखता है ना आपको, सो व्हाट हैपन, योर एयर विल फ्लो फ्रॉम द स्पेस टू दिस एरिया, राइट? और ये वेन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, राइट? सो एक बार ये रोटेट करेगा तो यहाँ जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स, दिस इज एयर पार्टिकल्स, ओके, या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वो पूरा उसको लेके इधर आएगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा. सी, हाँ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी, प्रेशर डिफरेंस होगा,
ओके, ये सब एयर मॉलिक्यूल्स इधर आ गए. सो अगेन एयर मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर. सो ऐसे रोटर के हेल्प से वी विल बी रिमूविंग द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्पेस. ओके, सो यहाँ अगेन लो प्रेशर क्रिएट होगा. सो असेंबली में से, स्पेस में से, मतलब जहां चेंबर में से अगेन द एयर पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम high pressure to low pressure. So continuously this vein will be moving and you will be taking out the air molecules from the space, right? और ये जो है ना black color का, it is a oil. Okay, you require the oil also for the smooth functioning of this vein, right? So यहाँ pressure develop होगा तो ये जो piston जैसा है वो open होगा and the air can be taken out, right? So जैसे ही यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, you can see air will come here and then it will be compressed and taken out. Okay, so ये जो है, it is a oil. Okay, sometimes it may happen that because of the pressure difference, जो आपका oil है ना वो इसके साथ mix हो जाता है, मतलब ये vein के अंदर आ जाता है, right? So due to that, sometimes the oil will also go inside the chamber, right? So proper care is to be taken while operating this kind of pumps which are having the oils, right? So if you see here, this is a rotor. ये आपका inlet है, oil is there, okay, and when it rotates, okay, ये इसके साथ air molecule यहाँ से वो बाहर निकालेंगे, right, through the outlet valve. So rotary pump requires routine maintenance first, as I told you. Okay, sometimes if proper care is not taken, along with the oil will also come out and it will affect the chamber, right? So maintenance is required. The oil level has to be checked properly, regularly. Agar oil kam bhi ho jaye, then your vein will not move properly. The oil must be chemically stable, okay? Otherwise, it may react with the medium. Oil is lost during the process of pumping, okay? While decreasing the pressure, there is a possibility of the oil being lost. And these oils, no, they are very costly. Say, for example, silicone oil we are using in our sputtering chamber, we are having this roughing pump. So, 1 लीटर का करीबन 10 से 11,000 रुपए का 1 लीटर सिलिकॉन ऑयल आता है, राइट? सिलिकॉन ऑयल में भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, फाइन, ग्रेड 1 2 ऐसे. सो पंप में जो यूज होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 10 to 11,000. So they are very costly. Vapors that condense in the system can pollute the oil, right? There is a possibility that oil may be polluted. So due to which there will be the degradation of the corrosion of the oil. So if there is a corrosion, you need to remove the oil from the rotary pump. Yeah, expensive synthetic oil is needed for the smooth working, right? We require expensive oil for the smooth working of this kind of pump. So in short, rotary pump is used for roughing, and just by the motion of gas from high pressure to low pressure, we are removing the excess gas molecules out from the chamber. Is it okay? समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है रोटरी पंप या रफिंग पंप या रोटरी वेन पंप? See, these things you will not find in your Avandulu. Okay, so that's why we have tried to write the maximum point here. कोई रेफरेंस बुक में से भी आपको ये पंप्स वगैरह नहीं मिलेगा. So you just need to explain the construction and how it works. Then after going for the second pump, diffusion pump. This is used for obtaining the high vacuum. You can obtain a vacuum till 10 to the power minus millitorr nahi hai, torr tak hi. We can obtain the vacuum till 10 to the power minus 10 torr with the help of the diffusion pump. ऐसा ही बिल्कुल same shape, means this type of vacuum pumps are only available. It has 2 cylinder. ये आप यहाँ देख सकते हो, this is the inner cylinder, ये outer layer है. और एक बार रफिंग करने के बाद जो assembly आपको मिली ना, that is connected here. ये ऊपर का portion है, where the chamber is connected in which you want the in which the roughing is already done. So this is a kind of second gear. Okay, roughing करने के बाद it is compulsory to use the diffusion pump.
Okay, if you want to go for the high vacuum, then it is fine. But अल्ट्रा हाई में भी जाना है तो भी डिफ्यूजन के बाद ही आप आयन पंप में जा सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑफ द सेम, ऐसा ही दिखता है आपका जो डिफ्यूजन पंप है वो। ये इनर सिलेंडर है, ये आउटर सिलेंडर है। और आउटर सिलेंडर में यू कैन सी दिस लाइनिंग्स। ये लाइनिंग क्या है? कंटिन्यूअसली द कोल्ड वाटर इज मूविंग सराउंडिंग दिस पंप, क्योंकि ये जो इनर सिलेंडर है ना, उसके बॉटम में यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे हीटर है और उसके ऊपर ऑयल का है। सो यू आर गोइंग टू हीट द ऑयल, ऑयल को आप इवोपरेट करने जा रहे हो। दैट्स व्हाई यू नीड टू हीट दिस, कूल द पंप। ओके, इसका आउटर सिलेंडर जो है ना, उससे हम उसका ऑयल का कंडेंसेशन करेंगे। और ये आपका आउटलेट वाल्व है। जो भी एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रैप होके बॉटम में आएगा ना, दे विल बी टेकन आउट फ्रॉम हियर। उसको बैक वाल्व कहते हैं, बैकिंग कहते हैं। ओके, सो बैकिंग हम यहाँ से करेंगे, ये जो नोजल है ये वहां से करेंगे, राइट? सो व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, सी ये इनर सिलेंडर है। ओके, यहाँ नीचे ऑयल होगा, ये हीटर है, फ्रॉम वेयर वी विल बी हीटिंग द ऑयल। तो हीट को, ऑयल को हीट करोगे तो क्या होगा? इवोपरेट होगा, राइट? दिस आर द नोजल्स। Okay, different nozzles will be there. So when it reaches up now, because of the pressure, the air molecules, they move out of the nozzle in the second cylinder. अभी second cylinder में ये आपने देखो ये सब lining है, from where continuously the chilled water, chiller साथ में connected होता है। So chiller से continuously the chilled water will be moving. So जैसे ही ये oil बाहर निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे तो एटमोस्फियर ठंडा है, राइट? तो उसका कंडेंसेशन होगा, राइट? और कंडेंस हो के जो ऑयल ड्रॉप है वो नीचे आएगा। अभी यहाँ ये हमने चेंबर के साथ कनेक्टेड है। थोड़े बहुत भी जो एयर मॉलिक्यूल होंगे, दे टेंड टू मूव हियर, राइट? ये डॉट मतलब जो बबल जैसे, दे आर द एयर मॉलिक्यूल्स। फाइन। सो ये जब एयर ड्रॉप नीचे आएगा ना, तो साथ साथ जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है उसको भी ट्रैप करते हुए इट विल कंडेंस, कम टू द बॉटम, और एयर मॉलिक्यूल फिर इट विल बी, वो ट्रैप्ड एयर मॉलिक्यूल है वो लिबरेट होगा एंड देन इट विल बी पास थ्रू दिस बैकिंग वाल्व। ये बैकिंग सिस्टम है, वहां से ओपन क्लोज ओपन की सिस्टम होती है, ये कुछ वाल जैसा होता है, राइट? हमको तो सिर्फ बटन दिया है, वहां से ओपन क्लोज करते हैं एंड योर एयर मॉलिक्यूल्स इट विल कम आउट इन द एटमॉस्फेयर, राइट? सो दिस इज द सेकंड स्टेप। लेट अस सी द वीडियो नाउ। उसके बाद अगेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, राइट? सो ये इनर सिलेंडर है, येलो कलर का ऑयल है, हीटर है, ये आउटर सिलेंडर है, और ये जो है वो आपका बैकिंग सिस्टम है, राइट? एयर को बाहर निकालने के लिए ये नोजल्स है, from where the air drops come out, oil drops come out. The diffusion pump is used for obtaining different levels of vacuum with Green- pressures up to 10 power minus 9 Pascal. ग्रीन कलर जो है ना वो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो ऊपर से आते हैं ना, दे आर द एयर मॉलिक्यूल्स, राइट? रफिंग के बाद जो थोड़े बहुत एयर मॉलिक्यूल्स या मीडियम के मॉलिक्यूल्स जो बच गए हैं ना, दैट आर दे। This device has very fast pumping speeds and can also be used for pumping corrosive gases. The principle is relatively simple. The vaporized oil jets grab the gas molecules in the chamber. As oil condensates on the cold surface, the gas gets free and is removed from the chamber with the pre-vacuum pump. बैकिंग बोलते हैं प्री वैक्यूम पंप, मतलब इट इज बैकिंग, राइट? सो इन शॉर्ट ट्रैप करते हैं हम गैस मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ द ऑयल एंड फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, राइट? सेम फिगर, दिस फिगर यू आर सपोज टू ड्रॉ if it is asked. So the high purity of oil, purity oil is heated at the bottom at a temperature of 250 degrees centigrade and it evaporates. जो oil droplets निकल रहे हैं ना नोजल से, क्योंकि छोटी छोटी नोजल में से निकल रहे हैं, very narrow tubes आते हैं, so it will be having a speed of 300 meter per second, right? So what happens from there, the oil drop will come and then it will confine, थोड़ी language hi-fi लिखी है, but you can write in your own words कि the oil drop will come out. As soon as they come out, they get condensed, and while condensation on its path, if they see any air molecules, they trap that air molecule and bring them to the bottom, right? सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना वही लिखा है इसमें. So it's fine. मैम हाँ,
मैम वो जो रॉड जैसा दिख रहा है उस पे ऑयल लगा हुआ है। लगा हुआ नहीं है, ऑयल यहाँ है, राइट। ओके मैम, वो इवापोरेट हो रहा है मतलब। हाँ, वहां से बाहर निकल रहे हैं। देखो ये फिगर, यू कैन सी, ये दिस इज ऑयल, येलो एरो है ना, वो ऑयल है। सो जैसे ही बाहर निकलेगा निकलेगा उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। जो येलो ड्रॉपलेट वो वीडियो में निकला था, राइट। और ये जो है उसको ट्रैप कर लेगा। कैन सी हियर, देखो ये ग्रीन कलर का एयर मॉलिक्यूल आया और यहाँ से ऑयल निकला, राइट। वो उसके साथ ट्रैप होके नीचे आया और वो गैस मॉलिक्यूल लिबरेट होके it came out of the backing system. The principle is relatively simple. The vaporized oil jets grab the gas. Fine? यस मैम। Okay. Molecules in the Okay. chain. Change kar do. Second is the sputter ion pump. Sputter ion pump is used for creating the ultra high vacuum, right? And it is told that this is a silent pump. Actually, diffusion pump हम चालू करते हैं. Sometimes you must have heard during the lecture also. उस मशीन की धड़ धड़ ऐसी आवाजें आती है, right? It is because of the diffusion pump, and along with the chiller we need to switch it on, right? So diffusion pump आवाज करता है, whereas sputter ion pump is very simple. मतलब वो it is a silent या quiet pump. Okay, क्योंकि वो जस्ट आयोनाइजेशन ही करता है. वी नीड टू कीप द इलेक्ट्रोड्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. और जैसे ही गैस आएगा उसका आयोनाइजेशन होगा एंड देयर विल बी द डिसोसिएशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस एंड दे विल बी ट्रैप्ड बाय द एनोड एंड द कैथोड, राइट. सो इसमें आवाज नहीं होती है. इट इज अ गैस एंट्रैपमेंट टाइप ऑफ वैक्यूम पंप combination. We are using a combination of electric and magnetic field, and there will be the ionization of the gas molecules, and we can create a vacuum up to 10 to the power minus 11 torr, right. So principle is option process. Let me show you the video first. देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे टिटेनियम का लेयर बनाया है. ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना, ओके, ये टिटेनियम का लेयर है जी. और दिस इज द एनोड विच इज, ये सिलेंडर है विच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. ओके, ये स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर से विच एक्ट्स एज एन एनोड, राइट. यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अप्लाई किया है और दिस इज टिटेनियम के साथ नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया है, राइट. सो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वी आर अप्लाइंग सम वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड, राइट. सो क्या होगा, कैथोड विल बी एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जो रेड कलर वन का है कलर है वो, और यहाँ से यहाँ ऊपर सिस्टम में कनेक्टेड होगा. मतलब अब डिफ्यूजन पंप के बाद का जो स्टेप है, डिफ्यूजन पंप ऑलरेडी वर्क कर लिया है, स्टिल देयर विल बी फ्यू गैस पार्टिकल्स लेफ्ट इनसाइड द असेंबली. फाइन. सो वो यहाँ से एंटर होंगे. So as soon as they enter, na, so electrons which are emitted from the cathode, they will collide with the gas molecule और उसका आयोनाइजेशन होगा, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, राइट. एंड यू विल गेट द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस. तो नेगेटिव चार्जेस हेलिकल पाथ में मूव करके दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो टिटेनियम के अंदर ट्रैप हो जाएंगे. लेट मी शो यू द वीडियो, आई थिंक दैट विल क्लियर द डाउट्स. सो दिस इज योर एनोड. ये टिटेनियम मतलब इतना डिस्टेंस नहीं है, मैग्नेट के ऊपर ही इसका कोटिंग करते हैं टिटेनियम का, एंड दिस आर द स्टेनलेस स्टील सिलेंडर्स व्हिच आर एक्टिंग एज एन एनोड. So this green color air molecules है. Is achieved by ionizing the gas. Gas enters the pump. It always has some ions in it that are immediately pulled towards the cathode. The ions are then trapped between the titanium atoms or bind with them chemically. Trade or titanium oxide depending on the original gas. In this process, also electrons and titanium atoms are kicked out from the cathode. So are accelerated towards the anode with a high potential of thousands of volts. These accelerated electrons are also forced to move spirally with the help of magnetic field caused by the magnets
This causes them to spend more time there, therefore increases their chance to hit the gas molecule and exit. The positive gas ions move towards the cathode to bring out even more electrons, titanium atoms. Titanium atoms that are kicked out may also deposit on the anode, and in this process there is some gas molecules under them. This pump can work for several years without maintenance. The pump operates at high vacuum conditions and gas at all is not large. However, the pumping efficiency drops, then is later replaced. Right? So as I told you, it consists of the two electrode, an anode, cathode, and a magnet. The anode is, they are the cylinders which are made up of stainless steel. Cathode is titanium, a layer which is deposited on the magnet, and magnetic field will be along the axis of the cylinder, right? That was shown in this figure. You can see here, it will be along the axis of the anode. Then after, the electrons are emitted from the cathode, which will collide with the gas. It will do the ionization, and the opposite charges get deposited on the anode and the cathode, right? For measuring this, the vacuum, no, a gauge known as a Penning gauge is used, okay, which is again a costly gauge. Cryosuction pump is not there. वीडियो है ये अल्ट्रा हाई मतलब मोर हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए. The cryo This is not there, but I'll just show you the video how it works. अभी अल्ट्रा हाई के बाद भी मतलब after using this iron pump, if still some air molecules are there, na, it can be removed with the help of the cryosuction pump. Sorry. Hey, what's up? The cryopump is a device used for obtaining high vacuum. It is based on gas absorption on cold surfaces. The cooler the surface is, the better the pumping. The cooling is achieved with liquid helium with a temperature of 4 degrees above absolute zero. The pumping is done in multiple stages, where each stage has a different temperature. For example, water condenses in the first stage, where the temperature is around 100 Kelvin or lower. During the water condensation process, also some other gases may be trapped under the water molecules, and this process is called cryotrapping. However, in order to effectively pump gases like nitrogen, even colder surfaces are needed. This is done in the second stage, where nitrogen condenses on a metal with a temperature less than 17 degrees Kelvin. In the second stage, the metal may also be coated by porous activated charcoal, and this allows absorbing even smaller gas molecules like helium or hydrogen. This process is called cryosorption. Right? So basically, in a cryopump, the pumping of gases is based on condensation, cryotrapping, and cryosorption processes. This is not there in your syllabus. Cryosorption pump is not there. Now, how to measure the vacuum? For measuring the vacuum, different gauges are used. We'll be going for the Pirani gauge and iron gauge. Pirani gauge is also known as a thermocouple gauge, okay, because there we are using a thermocouple. So it can measure the vacuum till 10 to the power minus 3 torr. Okay, above that it cannot work. So you can see it's a kind of Western bridge only.
Okay, so you need to balance the bridge. Okay, and let us see the video. This is how the gauge looks like. छोटा सा diode जैसा ही device है. Hey, what's going on? The Pirani gauge is a device used to measure low vacuum in a pressure range from 20 to 10 power minus 5 torus. The system consists of two tungsten filaments, a power source and a voltmeter or ammeter. One of the filaments is placed in the gauge tube and it is exposed to the environment where the pressure is measured. The other filament, however, is placed in. So see, this is a gauge. It's a western breeze only, and one filament is kept with the gauge tube. Gauge tube मतलब जहाँ पे आपको pressure measure करना है, and one reference tube you will be having, जिसका pressure हमें पता है. Fine. A sealed reference tube filled with gas at constant pressure. The filaments are heated up by passing current through them. As the gas molecules interact with the filament, heat is carried away. The higher the pressure, the more interactions with gas molecules, and the more heat is taken from the filament. The electrical resistance of the filament, however, depends on the filament's temperature. Therefore, the filament's electrical resistance depends on the pressure in the chamber. The electrical resistance is measured by following the Ohm's law. It can be done in two ways. Either one keeps the current constant and measures the voltage, or the voltage is kept constant and current is measured with ammeter. The Pirani gauge is often preferred over the thermocouple gauge because it is up to 10 times faster and a wider range of pressures can be measured. Right. So based on the difference of the resistance, the vacuum will be measured, right? ये यहाँ पे उल्टा है. The vacuum chamber will be connected here, and ये आपका reference resistance या तो reference vacuum होगा, right? Then you pass the current through both the resistance, and your filament gets heated, right? So the gas molecule, when they move towards the filament, they will heat the filament, right? And if the high pressure is there, then more and more gas molecules hit the filament, right? Heating zyada hoga, so your bridge will be imbalanced, right? So you need to adjust the resistance to balance the point. मतलब ये तो अभी ऑटोमेटिक सिस्टम ही आती है, डायरेक्टली आपको पिरानी गेज से you are getting the pressure, right? You are getting the pressure of the given chamber. I think this is not there. Iron gauge is not there. सिर्फ नाम दिया है, but will not be going for the iron gauge. सिर्फ ये पिरानी gauge ही पढ़ेंगे. Fine. So any questions from your side? No, ma'am. But it will depend on the pressure, no? If you have the low pressure, then temperature less होगा when you pass the current. काम क्या था? भी कैलेंडर में देखा उसमें पीटीएम दिखा रहे हैं सैटरडे को ये सैटरडे डे के पीटीएम ये या नेक्स्ट में देख लेता हूं डेट लेकिन पीटीएम पेंडिंग पर हमको तो कहाँ पीटीएम कोऑर्डिनेटर दिया है करेक्ट ना मतलब कुछ करना ना. अब देख लो, वो निकाल के रखो. सर्कुलर रखा है अपने इसमें नाम नहीं है इस बार नहीं ना, बस देन वी आर नॉट पीटीएम कोऑर्डिनेटर. बच्चों को पूछो. वो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा है टेस्ट के लिए अभी देख हेलो. Yes, ma'am. You have any information about parents teachers meeting? No, ma'am. See, they don't have. वो तो ऐसे ही लिख दिया होगा. पुराना जो एकेडमिक कैलेंडर है ना, वो कॉपी पेस्ट किया है. से कुछ करना नहीं हमारा नाम कहाँ है बट पीटीएम कोऑर्डिनेटर में? इसलिए मैं पूछ रहा हूं नहीं है ना? नहीं पक्का ना ना? पक्का नाम नहीं तो नहीं होगा. ये बच्चे भी बोल ही रहे हैं ना. तो जस्ट मुझे आया था एक बार आपको अपडेट करूं ऐसा कुछ खास नहीं
एकेडमिक कैलेंडर क्यों देखा? कब से इनकी क्लास लास्ट हो रही है, कोर्स तो कंप्लीट हो गया। ट्यूसडे से। इस तारीख को शुरू हुआ। बस हमारे तो बस ये देखो पिरानी बीच कंप्लीट। आज पूरा कोर्स कंप्लीट। हाँ, पेपर का अगर आपने फॉरवर्ड किया पीपीटी वही वाली सेम ऐसे मैंने नहीं देखा क्या है वो, वही है ना। वही वाली वो PPT पता नहीं एसएसएम ने क्यों फॉरवर्ड किया था। मैंने मैडम को बोला तो मैडम ने बोला कि मुझे भी नहीं पता है ऐसा। उसकी देखिए अभी मैं सुबह के लिए बनाता हूँ कुछ तरह। अभी सर बोल रहे थे सुनील सर की स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट देते हैं 75% जितना डिस्काउंट कौन दे रहा है? नहीं, बोले मैंने करवाया पिछले साल पार्टी के लिए हुआ बोलते हैं मैं तो करवाता हूँ 75% डिस्काउंट देते हैं एक बार हमारा टाई है तो के साथ एमओयू में तो बात कर लेते हैं। बस समझते मैं बुलाता हूँ क्या पूछ भी लेते हैं। बस अभी हो जाएगा ये चुनाव जाएगा। हाँ, हीटिंग तो एक्चुअली देखो करंट फ्लो होगा ना, तो जैसे हाई, if the vacuum is high तो more and more air molecules will be there and they will be colliding with the wire, right? So heat loss ज्यादा होगा। कहाँ पे लिखा है कि हीटिंग होगा? Temperature of R2 decreases because of thermal conductivity of gas. तो डिक्रीज होगा ना, R2 का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हीट ट्रांसफर होगी व्हेन यू पास द कर्व, वो कॉलिजन होगा उसकी वजह से, तो वो तो डिक्रीज ही होगा ना। R1 हमारा रेफरेंस है ये फिगर के हिसाब से, R1 हमारा रेफरेंस है, नोन प्रेशर लिया है यहाँ पे R1 पे, R2 अननोन है जिसका हमको मेजरमेंट करना है। समझ में आ रहा है? लो प्रेशर पे हीट डिसिपेशन कम होगा, हाई प्रेशर पे हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। हाई प्रेशर मतलब एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो गए R2 के साथ, तो हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, ट्रांसफर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारे पास, आयन पंप भी है, स्पटरिंग यूनिट में 3 पंप्स है। एक तो ये रफिंग है, डिफ्यूजन पंप है और आयन पंप भी है। हाई वैक्यूम पे जब जाते हैं ना तो आयन पंप ऑपरेट करना पड़ता है। सो पेनिंग गेज आती है, पेनिंग गेज से इसका प्रेशर मेजर करते हैं, 10⁻8 या 9 टॉर के रेंज में आता है, दैट वी यूज टू मेजर विद पेनिंग गेज। अगर आपको कभी देखना हो पंप्स तो दैट आई कैन शो यू, स्पटरिंग चेंबर में ही है, मुझे असेंबली ओपन करनी पड़ेगी, बट जब भी आप आओ कैंपस में तो यू कैन सी, आई विल शो यू। तीनों के तीनों पंप है एक ही चेंबर में। गेजेस नहीं देख सकते क्योंकि गेजेस आर अ काइंड ऑफ सर्किट, ओनली छोटे छोटे डिवाइसेस है, वो अंदर मतलब चेंबर के अंदर कनेक्टेड है, सो दैट आई कैन नॉट ऑपरेट। इंजीनियर जब आता है तभी वो ऑपरेट करता है। बाकी ये पंप्स तो आई कैन ओपन द चेंबर एंड शो यू, नीचे की चेंबर में है, और ये जो गेजेस है ना वो जो मेन चेंबर है उसमें है। ओपन कर सकते हैं बट वी हैव नेवर ट्राइड दैट, ऐसा है। So fine, I think I will stop now. So thank you all of you, and if you have any queries, doubts, you can mail me. I will try to solve your doubts. Yeah,
पीडीएफ आपको चाहिए, सॉल्यूशन के साथ तो नहीं है यार मेरे पास, वो पावर पॉइंट है, सो स्लोली स्लोली मैं आपको भेजूंगी। पीडीएफ मैम जो है ना वो आप एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हो, उसके सॉल्यूशंस तो हमने किए हैं, मतलब हाँ वो मैं मतलब पीडीएफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने किए थे लिखे थे मैं वो उसमें वाले। आपको पता चलेगा कुछ, सब रफ वर्क हाँ जैसा ही किया है, हाँ मैं आपके राइटिंग पता चलते हैं अच्छे। अच्छे कुछ नहीं है। स्लोली सो आई विल बी सेंडिंग यू। आज मेरा 6 घंटे का लोड होता है तो आज तो पॉसिबल नहीं है, कल सुबह भेज दूंगी आपको। ओके ठीक है, मैम। फाइन। सो ऑल द बेस्ट। मंडे लेक्चर है, वी विल मीट, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कुछ आपको करना हो रिवाइज या कुछ क्वेरीज हो सो थोड़ा डिस्कस करेंगे। ट्यूटोरियल ऐसा है तो आई विल नॉट टेक मंडे, क्योंकि अभी खत्म ऑलमोस्ट सब। हाँ, वो अकॉस्टिक्स वाला बाकी है ना, एक्स्ट्रा सम्स नहीं किए हमने शायद, कि कर लिए अकॉस्टिक्स थे। हाँ बस वही वही वही, ठीक है, तो खत्म हो गया सब। सो विल डिस्कस, चलो मंडे डिसाइड करते हैं सुबह के लेक्चर में। ओके, सो ऑल मैम द बेस्ट। एडिशनल्स और उसके लिए सिर्फ पीपीटीज और नोट्स ही करते हाँ मतलब थोड़ा बुक में से भी पढ़ना, पीपीटी में ऐसा हो कुछ पॉइंट मिस मिस हो गया हो तो फिर ठीक है, चलिए बाय एंड बेस्ट लक। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. शायद एग्जाम आपको ऑफलाइन देने की आए तो आप थोड़ा पढ़ के तैयारी करके रखना। हाँ, मतलब थ्योरी की एग्जाम, एलपीडब्ल्यू तो ऑनलाइन है, बट थ्योरी यस के मैम। लिए भी यू बी प्रिपेयर्ड। इसमें रोने वाली बात है नहीं, अभी तो ऑफलाइन आना ही है। छोटे बच्चे भी बेचारे एग्जाम देने जा रहे हैं ऑफलाइन, 10th वाले, तो आप तो अभी मैम बड़े फिर हो गए। हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर भी ऑफलाइन ही है क्या मैम, प्रॉपर ऑफलाइन है क्या? नहीं है, मतलब आई डोंट हैव आइडिया, बट व्हाट मुझे ऐसा लग रहा है, इट इज माय ओपिनियन, डोंट शेयर, कि हाइब्रिड मोड में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। तो लेक्चर्स जो है ना इट विल बी कंपल्सरीली ऑनलाइन, और लैब जो है ना इट विल बी ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी कैसा, कंपल्सरी नहीं आना है, दोज हु विश दे कैन कम फॉर द लैब, मतलब लैब आपकी हाइब्रिड मोड में चलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगे, ऐसा लग रहा है अभी का सिनेरियो देख के। अभी थोड़े थोड़े केसेस भी डाउन होने लगे हैं, यस मैम। सो देर आर चांसेस कि आप लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स को आना है दे कैन कम टू द कैंपस। ऐसा कंपलसरी नहीं करेंगे कि नहीं आपको आना ही है। हाँ, एग्जाम अगर केसेस डाउन हुए तो सेकेंड सेम में एग्जाम के लिए ऑफलाइन बुला सकते हैं, इवन फॉर एलपीडब्ल्यू ऑल्सो। ओके मैम मैम। मतलब ये जो अभी एग्जाम होगा फाइनल सेम, वो तो देखो वो तो ऑफलाइन ही होगा, और एलपीडब्ल्यू भी ऑफलाइन होगा। एलपीडब्ल्यू तो ऑनलाइन ना, फर्स्ट सेम की सर्कुलर आ तो गया मतलब ना। वो जो अपना वर्चुअल लैब होता है उस पर परफॉर्म करना होगा। हाँ उसमें करना होगा। हाँ मैम उसका नागा है वर्चुअल लैब का, तो सिर्फ वो वाई फाई लेके ऐसा कुछ कर भाई वही लेंगे तो अच्छा है, चलो। मैम एक बेस्ट बार है वो मैम। मैंने बोला था, अच्छा ठीक है कोई नहीं, हो तो मैं, कोई नहीं मैम, वो तो सॉल्व हो गया। हो गया सर, ठीक है, चलो। तो मैम सेकेंड सेम में फिर निर्मा वाला वो बस ट्रांसपोर्ट भी ऑन होगा कि वो नहीं हाँ होगा? ऑन होता है, स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ हाँ। लास्ट में जब ये अक्टूबर नवंबर में हायर सेमेस्टर के बच्चे आ रहे थे ना, तब पूरी बस भर के आती थी, सो डोंट वरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू मैम। हमारा कितना सिलेबस बाकी है फिजिक्स का? हो गया खत्म। ओके मैम ठीक है। ठीक तो है, मैम अब क्लासेस होगी फिर? तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से नो क्लासेस ना? मैं ऐसा नहीं बोल सकती, मैं तो मीटिंग ऑन करूंगी, बातें करनी है तो आ जाना। या मैम डाउट क्वेश्चंस करवा देना। क्या करवाओ? प्रैक्टिस मैम करते। क्वेश्चंस लाइक प्रैक्टिसिंग। ओके, दैट ऑल्सो आई कैन डू, कर यस लेंगे। मैम। ठीक है, रिवीजन।
ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, bye. बाय मैम। Bye, Thank you, everyone. ma'am. Okay, bye. Take care. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Bye.